Hello and welcome guys once again to Language Space. My name is Imran and we are back with another video of our journey towards learning English. If you are new to our channel, kindly subscribe to our YouTube channel. If you're watching us on Facebook or on Instagram, do follow us on Facebook or on Instagram. Dear students, अपने पिछले वीडियो में हमने अपने पास्ट टेंस को कंप्लीट किया था एंड अपने आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, कहाँ पे ये यूज होता है और इसको इजी बनाने के लिए इसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें, ये फ्यूचर टेंस होता क्या है? जैसा कि इस सीरीज के शुरू में हमने आपको बताया था कि अपने टाइम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इफ यू ड्रॉ अ टाइमलाइन, सो एनीथिंग which is going on right now is the present tense, or anything that has happened before now, whether it's a minute before now, 2 minutes before now, or years before now, everything of that comes in past. And anything that will happen after now, so anything that's going to happen after now, that will be future. Okay, so अगर कोई भी एक्शन आज के बाद होने वाली है, अभी के बाद होने वाली है, चाहे वो अब से 2 सेकंड बाद हो, 10 सेकंड बाद हो, 1 घंटे बाद हो, 1 मिनट बाद हो, कभी भी हो, तो वो एक्शन फ्यूचर में काउंट की जाती है। सो इन शॉर्ट वी कैन से एनी एक्शन दैट विल टेक प्लेस आफ्टर नाउ, दैट इज इन फ्यूचर। और फ्यूचर की जो एक्शंस होती हैं, जो हम फ्यूचर टेंस में डिस्क्राइब करते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी मूव टू द एक्चुअल फ्यूचर टेंस, let's see how you can represent the future. Dear students, the first thing जो हम future tense के बारे में पढ़ेंगे वो ये है कि आपकी conversation जो आप future tense में करोगे, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी कैटेगरी होगी ये informal conversation. Informal conversation means the conversation that we do with our friends, with our family, जहाँ पे formality ज़्यादा नहीं रहती है। And the second one, it may be a formal conversation. So a formal conversation means a business conversation that we do in our business, in our office, etc. अगर हमारी conversation जो हम कर रहे हैं वो informal है, in that case हम 2 तरीके से फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग गोइंग टू। हम सेंटेंस के साथ गोइंग टू यूज कर सकते हैं और फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। एंड दूसरा तरीका जो इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन को रिप्रेजेंट करने का है वो ये है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। राइट, सो देयर आर 2 वेज जिससे हम इनफॉर्मल फ्यूचर टेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं या इनफॉर्मल फ्यूचर टेंसेस बना सकते हैं। पहला हम गोइंग टू यूज कर सकते हैं और दूसरा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। ये गोइंग टू जो है ये कब हम यूज कर सकते हैं? जब कोई भी हमारी एक्शन जिसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं दैट इज प्लान्ड एक्शन। कोई ऐसी एक्शन जो हमने ऑलरेडी प्लान की हो और उसके बारे में हम किसी से डिस्कस कर रहे हों। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हम तब करेंगे जब हमारी जो एक्शन हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं दैट इज अनप्लान्ड। वी हैवंट प्लान्ड दैट एक्शन, सो इन दैट केस we can use present continuous. Now let's see first of all example of the planned action जहाँ पे हम going to use करेंगे, and उसके बाद हम present continuous
का यूज कैसे करते हैं फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो देखेंगे. नाउ लेट्स फर्स्ट सी कि हाउ वी कैन यूज द गोइंग टू डिस्क्राइब आवर future actions which are planned. Let's see with an example here. I am going to meet my friends this weekend. I am going to meet my friends this weekend. In this sentence, I'm going to meet my friends on weekend. Now, say for example, it's a weekday. It could be Monday, it could be Tuesday, or any day of the week apart from Saturday and Sunday. और मैं weekdays में ये प्लान बनाता हूँ कि इस weekend मैं अपने friend से मिलूंगा. So now this is a planned action. So because it's a planned action, we use going to represent it, right? Let's imagine the second example. Rohit is going to see a doctor tomorrow. Now here as well, रोहित क्या करने जा रहा है? रोहित डॉक्टर से मिलने जा रहा है या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट उसने ली है, डॉक्टर को के पास जाने वाला है. So that is a planned action. He has already booked the appointment and he's going to see the doctor tomorrow. So this is also an action which will take place in future. It hasn't taken place yet. It's going to take place in future. And इस action को हम going to से represent करते हैं. Alright, so I hope that with this example, going to is a bit clear. Let's take another example. Ria is going to take a leave from office on Friday. Okay, Ria is going to take a leave from office on Friday. Now here imagine a situation, आपकी एक फ्रेंड जिसका नाम रिया है, आप लोग एक प्लान बनाते हो कि आपने कहीं पे जाना है. फ्राइडे बीइंग ए वर्किंग डे, आप अपने फ्रेंड के साथ ये डिस्कस कर रहे होते हो कि हम लोग जाएंगे, लेकिन आपका फ्रेंड आपसे ये कहता है कि फ्राइडे को तो उसका ऑफिस है. आप उससे कहते हो कि नहीं, रिया उस दिन एक लीव ले लेगी ऑफिस से. सो रिया इज गोइंग टू टेक अ लीव फ्रॉम ऑफिस ऑन Friday, right? So this action hasn't taken place yet. It's going to take place on Friday, but it's a future action. We are representing it with the help of going to. So I hope that with these three examples, it's clear how you can represent the future tense using going to. Now let's see how we can represent the future tense using the present continuous tense. Now the second way to represent any future action is using the present continuous tense. How you can do that? Let's see with an example. I am working from home tomorrow. I am working from home tomorrow. Now imagine a situation here. आपका एक फ्रेंड है जो आपसे ये कहता है कि कल जब आप ऑफिस जाओगे तो जाते समय आप मेरे से मिल के जाना, लेकिन आपने कल का ये प्लान बनाया हुआ है, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, आप घर से ही काम कर रहे हो, तो आप उसको कहेंगे आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टुमारो सो आई कैन नॉट मीट यू. मैं कल घर से ही काम कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं मिल सकता. So this action, actually if you look at this part of the sentence, I am working is the present
continuous tense, but यहां पे हम इस present continuous को using a time stamp यूज कर रहे हैं फ्यूचर को डिपिक्ट करने के लिए, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड दैट इज एन इनफॉर्मल वे टू डू दैट. नाउ लेट्स सी a second example. Ronit is writing that letter on Monday. Ronit is writing that letter on Monday. So Ronit is going to write a letter. You have a friend who's about to write a letter. He hasn't written it yet, but he's going to write it on Monday. So you can describe this using the present continuous. Ronit is writing that letter on Monday, right? So this is how you can use the present continuous and going to represent the future, right? So these are the ways to represent the future in the informal conversation. Now let's see how we represent the future in formal conversation, and that will be our first future tense, which is future simple tense. Future simple tense जो है इसको हम future indefinite tense भी कहते हैं. It's also known as future indefinite tense. Now why indefinite? If you remember, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, हमने उस टाइम पे बोला था कि ये जो एक्शन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल्सो द एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम, however we are not sure about the status of the action, whether the action is right now going on or whether the action has already finished, right? So that's the reason it is called as simple indefinite tense. And here also, जब हम इस एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, वी आर नॉट श्योर अबाउट द स्टेटस ऑफ द एक्शन, एज इन व्हेन इट्स गोना स्टार्ट. Actually, it can be defined only when we use a timestamp with it. जब हम एक टाइम स्टैम्प यूज करेंगे उस टाइम पे हम इसको क्लियरली बता सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू डू नॉट यूज अ टाइम स्टैम्प विथ दिस फ्यूचर सिंपल टेंस, हम ये नहीं बता सकते कि ये एक्शन कब शुरू होने जा रही है. राइट? सो विद दिस आई होप दैट फ्यूचर टेंस थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा कि क्या है. Now, first of all, before we move further to see where we can use the tense, first of all, we'll see the sentence structure of the future tense. So, in order to make a sentence in future indefinite or future simple tense, we first of all use subject as we do with every tense. And after that, to make it a future tense, we use will. And then first form of verb. Okay? Simple. So what we do, we use subject, will, and first form of verb. And this is the way how you represent future in formal conversations. Whenever you're doing formal conversations, you won't use going to, you won't use present simple, you will use will. आप will का use करेंगे, going to और future continuous का use नहीं करेंगे अपनी formal conversations में. So let's see with the examples. They will play tomorrow. She will work this weekend. All right? And let's take the third example. We will work hard for
our exams, हम अपने एग्जाम्स के लिए हार्ड वर्क करेंगे. So here you say I have used different subjects. I've used third person plural, third person singular, and first person plural. But one thing that remained common is the will. So future simple tense में, for the matter of fact, किसी भी फ्यूचर टेंस में, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी सेंटेंसेस में विल हमेशा कॉमन रहता है फॉर एवरी सब्जेक्ट. लाइक हैड कॉमन रहा था सारे सब्जेक्ट्स के लिए, राइट. प्रेजेंट में चेंज होता है, प्रेजेंट में हैज और हैव यूज होता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट. थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज यूज होता है, बाकियों के लिए हैव यूज होता है, लेकिन यहां पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट हम सिर्फ विल का यूज करते हैं. सो दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस. नाउ this will be it for this video. In our next video, we will see where we can use the future simple tense in our real life. We'll relate it with our real life situations, and we'll also see the contractions, and we'll also see how we can convert our affirmative sentences of the future tense into negative and interrogative sentences. Till then, stay tuned and do not forget to subscribe our YouTube channel. Thank you very much.